हेलो गाइस। लेट्स बिगिन विद दिस न्यू वीक। ठीक है, तो सुबह से देख रहे हैं हम गोल्ड बहुत ज़्यादा फॉल दे रहा है एंड इट इज़ एज प्रेडिक्टेड, क्योंकि जैसे पिछले स्ट्रीम्स में मैंने कहा था कि ये जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा ये वाला, ठीक है। So this was the resistance, this high was the resistance, and it actually reacted there. It gave the confirmation of sells and it started to fall down. Now let's wait for the structure to shift. Actually आज इसने I was expecting कि this low will break at 6:30, but unfortunately it started breaking down. So we will just start taking the trades once we get the confirmation on this zone. Okay. So yeah, so it is the so today's perspective is for the sales, as well as if the price started going up towards this area. Until then we won't buy any, we won't place any buys on the charts. And yeah, so as per the trend or as per the momentum, we are still very bearish, very strongly bearish. And I really hope that today we will see a good good order, and then we will just start selling off this selling with this price, which is 33.50. Okay, below that everything is sells for me. And yeah, let's see. So I really hope you guys are enjoying this content, and let's just see. And yeah, because we are so late today, the stream should have been start within 5:30, and actually the order was from this area and it actually got messed out today. So yeah, no worries. It is painful for me, of course, just because it was a good order, it was the planned order, but it started falling down. It's like at the start of the streams only. So let's see what we can do here, or what we can able to capitalize. Okay. So I have the level set here as the support area. Until then, until this area, I might see a good fall. But if price reach earlier to this area, then I think I won't, I won't take this trade. And yeah, let's wait for the buys also. So only if this candle goes up for the retest, we are going in, guys. And if not, then we are waiting, of course. Also we can able to see M5 has no wick upside. ठीक है. And then आवाज खूप कमी येतोय. Okay. Hello, good evening guys. आवाज येतोय ठीक येतो आता. Is it good now guys? तो शुरू करते ही ये गिरना चालू कर दिया. ठीक है. So no worries, no FOMO guys. So we will wait for the retest of this area. Once this retest is done, we will start selling off the price. ठीक है. Selling of the gold act, I mean. And if the price start going above, आवाज आवाज क्लियर है गाइस? आवाज क्लियर है या फिर थोड़ा कमी आता है? नो आइडिया. खूप कमी येतो. चलो एनीवेज व्हाट, आवाज का क्या इतना है, अपने को बस ट्रेड लेना है. ठीक है. विल जस्ट फोकस ऑन ट्रेड बिकॉज द मोमेंटम इज गुड. ठीक है. This rejection is not good, but still we will go with the momentum. And most probably we will, if we get a retest of this area, then we can easily start selling off, of course. Also we are waiting for 15 minutes. 15 minutes is so good, so it is worth risking there. Okay.
और आज टोटल रिस्क होगा $1,200, ठीक है. I will show the accounts when the order is done, just because the momentum is strong and we cannot have a time to discuss that, ठीक है. हेलो गुड इवनिंग. यस क्लिअर आहे, बट थोडं कमी येत आहे. अरे यार, आय हॅव नो आयडिया आता कमी काय येत आहे. सो मी असा पकडू का माईक? आय थिंक इट कुड बी गुड. ठीक आहे. आता क्लिअर आहे. आता आय आय रिअली होप आता क्लिअर असायला पाहिजे, कारण की लिटरली खूप जवळ पकडलं आता माईक. चलो then, we are waiting just only for the perfect signal. Once engulfing or some rejections happens on this area, we will start selling off with the very tight stop loss. And yeah, so that is the plan for today. I'll be risking $1,200 to $1,300 on this trade, with a lot of 5 or 3. Depends on the stop loss which we are getting. ठीक है. If this candle turns to be engulfing, we will just enter with the stop loss of that area. So we'll just enter this way, and we will see to it we have proper 1:3 today, because previous 2 weeks we had actually messed up with the RR, and for that reason the account could not rise. And when I was back testing yesterday, I got to realize that thing, and I really hope I won't repeat the same mistakes. Okay, so probably we had a good week also, but the RR could not played, and for that reason the account did not reach where it should be reaching, and that's the reason we are just 1.2 plus percent up. And yeah, of course, that is not also bad thing. We have managed our risk properly, and for that reason we are still in positive side of the account, and we had not did anything yet wrong. So ये अभी क्लोज नहीं हुआ, ठीक है. सो वी आर नॉट इनटू दिस ट्रेड, ये क्लोज नहीं हुआ. आई सेड कि अगर ये एंगल्फिन या फिर यहाँ पे भी अपना सिग्नल प्रोवाइड होता है, देन ओनली वी विल एंटर. ओके, so the price has pulled back to the zone, so we will just wait for some confirmations. Okay, so we have a nice structure over this side on M1, M15, M15 also. So just wait for the confirmation and then we will enter. Okay, within 23 minutes we are having H1 and M30 candle, and for that reason we can go with the volume of that both candles, as well as yeah. So M30 and H1 could push price towards downside more. We'll just wait for these confirmations. Once the confirmations arrive, we will just start to selling off this price. ठीक है. I won't hurry, I won't rush. ठीक है. So I'll just follow the plan, follow the process, and whatever the result we will get, we'll just accept it with full heart. Okay. चलो guys, I really hope अभी आवाज वगैरह सब clear है, and the charts are also clear, and everything is now clear. I just hold this mic on my hand, so for the reason कि आवाज का कोई दिक्कत ना आए. So yeah, so once the price start breaking this level, okay, so we have marked this level here. Once this price start breaking this level, we will just start selling off. We only need a few confirmations that the price is willingly to move towards the downside, and I'm having this last area of support, this which I've marked 33.37. So until then we can capitalize a good move. ठीक है.
and my buys will only trigger above this area. There won't be buys any above this highs or either this highs, because the structure is strong, the momentum is strong, and overall we are going for the downside. And for that reason, we should be taking a buys confirmation thoda late, and I think it could be a good thing for us, and a safe approach for us also. So there won't be any buys up till this level breaks and price start moving upside. Till then, we will watch. We will just wait for our signals, or we will wait for our confirmations to arise. And once the confirmations are on the charts, we will start the selling off. And yes, hopefully we will hit our take profit today. And if not, then it's okay. It's a process, and we will have a third consistently losing day. And of course that is not a big deal at all. So let's just chill and wait and let the price make its decision, and then we will react. Okay. Hello guys, how are you? Hi Chanakya. Hi Scalper. Hi Zubair. So what are you looking for? Like, are you looking for buys? Are you looking for sells? Because H1 candle, like most of the traders or most of the retail traders would just jump for the buys, just looking for the H1 candle. And yes, the rejections says it all, that the price wants to go up. But as you all know, we follow the structures, and until unless the structure don't shift towards the buy, we don't get any confirmations. And for that reason, I'm just following this lows. Okay, so this was the first low, second low, third low break. I was waiting for this low to break, which was the fourth low, and it did break, but the retracement is pretty long. And once we start breaking the lows again, we'll just jump on the trade, and we will squeeze our 1:3 very easily today. Okay. कैसन हुआ हो सर जी? बढ़िया भैया. So this is the plan, guys, for the downside. Okay. And if not, then of course you know what we are going to do then. We'll just wait for the price for the confirmations. Okay. We'll try with this cells. ठीक है, ये वाला. Or yeah, if price have a good retracement on this area, we'll try to catch this one sell. And यहाँ से लेके तो नीचे तक तो we could have a nice RR also. ठीक है. But if price is not about to come there, and okay, so yeah, so we have this 15 minutes here. आज मेरा जो टारगेट रहेगा, वो मोस्टली मुझे अच्छा एक स्टॉप लॉस चाहिए, जिससे मैं अच्छा खासा रिस्क कर लूँ, है ना. एंड देन आई कुड प्रोबेबली गो फॉर द सेल्स, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है आज सेल्स का. और इट वाज एज प्लान्ड. सुबह से हम प्लान कर रहे थे इन आर एक्सक्लूसिव मेंबर ग्रुप कि गोल्ड आज नीचे अच्छा मूवमेंट देगा, क्योंकि पूरा एक वीक हुआ था, बस कंसोलिडेट कर रहा था. एंड विद द स्ट्रक्चर्स वी नो बिफोर ओनली कि ये सेल्स को आज अच्छा मूवमेंट दे सकता है. एंड दैट्स हाउ वी जस्ट क्रैक एशिया एज वेल एज आज लंदन भी हमने क्रैक किया. So it's a third trade for me and 2 winnings. Let's see what happens in New York. So वैसे देखा जाए तो I am done with trading, okay? But as you all know, streaming should be live, and this
account or this challenge should go on, and for that reason I am sitting here. There should be no cheating कि देखो मेरे पास बहुत chances थे कि मैं लंदन में या फिर एशिया में ट्रेड लेके बहुत अच्छा गेन कर सकता था अकाउंट, बट एज प्रॉमिस आई विल जस्ट execute the orders when it is live on streams, and for that purpose only I have invested in this account, and let's see how much time it will take, right? And I already cleared you कि अगर ये if it takes a month or if it takes a year, I don't care. आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा अगर जो भी जज करता होगा, so it's all on you. So let's just wait for our sales, ठीक है? We'll just focus on our charts, no bullshits, क्योंकि आज अच्छा वॉल्यूम भी है मार्केट में जो हमें पिछले पूरा हफ्ता नहीं मिला था, and let's see if we can get nice sales on this area. So we are approaching the area of resistance, and if there is a good confirmations, yes, of course, we will just have the perfect sell from this areas, ठीक है? So we are left with 14 minutes. Once the H4 starts, kicking in, and H1, H1 is also going to come. M30 is also going to come. So we'll have a very good volume, of course. Man of words. Oh, thank you, Zubair. I'm just trying to be consistent, that's all. Even I'm actually feeling good when I'm, trading in front of you all guys, or properly risk manage करके कंसिस्टेंटली ट्रेड ओपन क्लोज या फिर जो भी एग्जीक्यूशन है वो कंसिस्टेंट में कर रहा हूँ वो चीज़ पे को लेके. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि मैंने ये चैलेंज लिया. इट इज़ द टफेस्ट चैलेंज आई नो, बिकॉज टू पास अ सिंगल अकाउंट, अ सेम अकाउंट इज़ वेरी टफ. either you have 5 accounts, ठीक है, एक साथ, and then you just go aggressive on 2 accounts and you go conservative on 3 accounts. That could also make sense क्योंकि उसमें से you have a probability of winning 3 accounts and losing 2 accounts. But if I'm doing with only a single account and I'm trying to pass it, so it is
So the probability is like 50-50. It will get, it will like, it will pass or it will just blow. So for that reason, it is the hardest challenge, and nobody does this, and so for that reason I'm just doing it. So the resistance is not making sense, guys, because there is we are not seeing any rejections over there, and for that reason we won't just sell off just after looking for the momentum. We'll wait for our confirmations. Once the confirmation arrives, we will go confidently inside. Okay, and that what actually matters. जितना कॉन्फिडेंटली तुम ट्रेड पे, मतलब ट्रेड ओपन करते हो या फिर उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो वही कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा होल्ड करने में या फिर अपना अच्छा एग्जीक्यूशंस लाने में, ठीक है. सो द कॉन्फिडेंस इज मस्ट व्हेन यू आर ट्रेडिंग, एंड वो आता है जब जब आप जब मोस्टली यू गाइस go through your setups and repeat it daily. ठीक है, बस स्ट्रेटजी शिफ्ट मत करो. एक ही कोई भी स्ट्रेटजी चलती है. मैं तो देखो, मैं तो बहुत पहले से ही बोलता हूँ कि यू कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन ट्रेंड लाइन्स, यू कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट. बट उसमें रिस्क मैनेजमेंट अलग रहता है, या फिर आप कैसे उसको ग्रैब करते हो, दैट मैटर्स. सो psychologically you can go with any strategy, but you have to just be disciplined. You have to manage your risk properly. You have to do the money management properly. Okay, and that is the actually key for the success in this markets, as far as I've experienced. तुम स्ट्रैटेजी कौन सी भी लो, हर एक काम करेगा, हर एक. बस उसमें अभी अगर डिफर करना हो तो उनका विन रेट क्या होता है. Okay, so if the strategy is having a win rate of 30%, so it is a bad strategy, right? And if the strategy having a 60%, it's a good strategy. If the strategy having a win rate of 70 above, it's a great strategy. ठीक है. So इसी तरीके से स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि हर एक बिगनर का वही लोचा होता है कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ. स्ट्रेटेजी में कुछ है ही नहीं. So the price is waiting for H4. ठीक है, we have 7 minutes for the H4. forex.com पे 1 घंटा बाद में दिखाएगा. ऑफ कोर्स उसका H4 का प्रिंटिंग अलग है. ठीक है. So this is the zone, or we can say this is the what we say resistance level. ठीक है, यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन आता है, we will start selling off, and अच्छा होगा अपने लिए, क्योंकि हम बहुत हाई प्राइस से सेल करेंगे, and we could easily get 1:5 on this trade. So let's see if we could, if we can, and that is still 50-50 chances, right? So कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल सकता कि यहाँ से सेल ही मिलेगा, बट व्हेन आई like if it is visible to me, of course I will just jump to the cells. So we are still not having any confluence. Will now quietly wait for 6:30. ठीक है, वॉल्यूम आएगा अच्छा, कैंडल भी अच्छे बनेंगे. And how much time we are left for it is only 6 minutes 30 seconds. Okay,
लुक इतना सिंपल है, जो अपन ने बस रेजिस्टेंस कंसिडर किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत सिंपल रखो, हर एक चीज़ बहुत सिंपल रखो, अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जितना सिंपल है उतना बेनिफिशियल रहेगा, हमेशा याद रखना। और जितना कॉम्प्लिकेट होगा उतना खतरनाक होगा आपके अकाउंट्स के लिए। सो मेक श्योर यू आर जस्ट क्लियर इन योर माइंड, दैट्स इट। सर लोक ए प्लस बी प्लस सेटअप बनवता असं सांगता की हा आमचा ए प्लस आहे असं तसं बोलता, बट मला एक विचारायचं आहे की आपण प्राइस ॲक्शन करताना प्राइस ॲक्शन करंट सिच्युएशनला जे करते ते फॉलो केलं तर बेटर राहील. एक्झॅक्टली, दॅट इज द पॉइंट. आशुतोष, जे पण चाललंय, जे पण स्क्रीनवरती दिसतंय त्याला फक्त रिॲक्ट करा. तुम्ही प्रेडिक्ट करायचं ट्राय करू नका, आपली तेवढी लायकी नाही आपण प्रेडिक्ट करू शकतो हा मार्केट किंवा कुठलाही मार्केट, ठीक आहे. सो आपल्यापेक्षा खूप हुशार लोक आपल्या ऑपोजिटला बसलेले आहेत, आपण त्यांचा अंदाजही लावू शकत नाही आता या जन्मात. सो मेक शुअर जे समोर दिसतं त्याला फक्त तुम्ही रिॲक्ट करा. आणि मी पहिल्यापासून बोलत आलेलो आहे की इफ यू स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द मार्केट्स, देन बी रेडी फॉर द डार्केस्ट साइड ऑफ द मार्केट्स, ठीक आहे. अँड इफ यू हॅव अ गुड हॅबिट ऑफ रिॲक्टिंग विथ द मार्केट्स, तर त्यामध्ये असं येतं की तुम्ही त्यांना एक रिस्पेक्ट देताय, ऑर एल्स यू आर गोइंग विथ देम. इफ यू गोइंग अगेन्स्ट देम, संपला विषय मग तुमचा. ए प्लस वगैरे काही न बघता डायरेक्टली प्राइस अँड कॅन्डल जे सांगते ते फॉलो केलं तर त्याला गॅमलिंग तर नाही म्हणत येणार ना सर, ऑफकोर्स नाही. Okay, so guys, before 6:30, it is having a liquidation of the structure. Once the liquidation is confirmed, we'll just jump for the sales as per plan, ठीक है. So this was the resistance which actually got broke. So this is not any more resistance for us. Now we'll just wait for the price to give us any kind of confirmations that it just came up for this liquidation. Once this liquidation is taken away, so it could push towards the downside very easily, okay. So that is the plan. Hi Hill, how are you? What is your actual name? Hill? Hell. I have heard it for the first time, by the way. Okay, if this area just was for the liquidation, we will come to know with some confirmations, okay. If this area is a liquidation, and if it is not, it will convert to the BOS, and we'll just wait for the another BOS for the sell side. That is the plan. So we are just waiting.
We are left with only 1 minute. Once we start selling off or we have the confirmation of liquidation, we will just start to sell off. Okay, so that is the plan. आप हर स्ट्रीम मध्ये कॅप क्यू वेअर करते हो? जस्ट बिकॉज आय एम ग्रोइंग माय हेयर्स and it won't look good for now, and for that reason I am wearing the cap. और मुझे पसंद भी है, so that is the another reason. So it is not a liquidation, it gave us the confirmation of break of structure, this area, ठीक है? Just because the price did not, start falling from that area after the wake off. And yes, we will just wait now because we have another sell area coming and we will try there. Okay, so if we go for H1, we are still looking for sells. Okay, this is the huge rejection, and we should of course एक minute. Okay, so this is a good rejection, and yeah, so this thing can push markets toward the upside, but इसका भी एक confirmation होता है, वो भी अभी तक है नहीं markets में, so that is also not confirm कि upside जा सकता है. So we will just wait for the last structure to break of sells, and अगर वो break होता है then only we will jump for the sells. Otherwise we will just have a lovely waiting, of course. ठीक है, so आज का perspective selling का है, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब I won't go for buys and I don't want to get trapped within this manipulation because back to trades we got trapped, and for that reason, yeah, let's see. Okay, so it was a double both side liquidity. I consider this double side liquidity, not double side we can say, but it is a kind of a liquidity which I know. So yes, we are good to go ourselves. We'll wait for M1 confirmations. We'll just jump for the sells there, and we really hope that we continue for the downside. Okay, so the structure is not yet broke. It got just liquidated. Okay, and we did not got confirmed with the break of structure, and for that reason I will be looking for sells without any doubt. Okay, so once the price start breaking this low, this one, okay, once this low starts breaking we will just sell off. Okay, it could be a good trade, guys, trust me. We have this A plus setup going on. आई थॉट तुम टोपी पहना रहे हो. अच्छा भाई, किसको? बहुत जनों को टोपी पहनाई है, नाम तो बताओ.
चलो we are good to sales guys, ठीक है. We are just entering after this candle get close below this area, then only we are entering for the sales, ठीक है. Okay, the lot which I'm entering is 4 standard lots. Once this candle close below now, we will just go for sales, ठीक है. And we'll probably wait for our 1:3 here. Yeah, so that is the plan. Okay, so now we have just 35 seconds of waiting and we are just entering, ठीक है. Even if we hit our stop loss, no problem, part of the game. Of course, it is a part of a game again. Because we have the upside liquidity also, ना, so अच्छा push आएगा. Alright guys, I have entered, ठीक है. Same stop loss है. We are into this trade guys. Let's go now. We are confirmed with the liquidity, we are confirmed with everything now, ठीक है. Chalo, with a good volume, we are going for our TPs. The only thing we want is to close this 15 minutes after 7 minutes the way it is now. If it start moving upside to this box area before closing, then we might exit, okay? Because we don't need that fake out, and if it start squeezing up, then it might go for the fake outs, okay? Shall I sell? Of course you can sell, even if you are ready with this risk to take. Now we are just waiting for what, that M15 should not close above this area, ठीक है. ये जो support नहीं लेना चाहिए इसने, तो वरना फिर liquidity का फिर that is the false signal, and we could might go towards the opposite direction, or that is the only possibility we could have on this charts, ठीक है. Up till then we are good to go for sales. We have every confirmations, okay. Today we have the liquidations with us, which actually carries a good volume in the markets, and let's just hope that we continue for the sales, okay. So this is the actual 1:3, or either we can pull this order to this area, okay. So we'll just exit just because of the plan we are executing is of 1:3 on this level, okay. If it goes to straight TP, should you hold this for 3%, bro? Actually, I have put it, I guess my risk is for $1,300, and I'll be getting $3,400 on this trade.
only one, I actually expect only one thing from this trade, that when the M15 is about to close, it should not close above this particular area, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसको है ना थोड़ा एक रेड कलर देंगे. So that is the confirmation box for us. Just because why, if we are considering this liquidity, it should not just fake out and go upside. And if it start moving to upside, of course it has a 95% chances that it will go and hit our stop loss. But if it is not continuing to the upside, we can straight go for the TP. Okay, and it's a good trade. Okay, so momentum is good, confirmation is good, everything is good, risk is good, everything is perfectly fine, polished. And also good uh, thing had just happened on the charts is we just broke this low. So it is another confirmation that we are into the sells still. We are still into the sells, right? So the results is buy product now. If it comes to the take profits, okay. If it goes for the stop loss, it's okay. Will not entertain that much more. क्योंकि प्रोसेस फॉलो करनी थी वो तो कर लिया. अभी रिजल्ट जो आना है वो तो पूरा बाय प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते. And that is what I teach my students in my exclusive group, and they are very well known to this. So yeah. यही होता है जब बस रिजेक्शन देख के अगर कोई बाय करता है एंड विदाउट एनी कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, तो सीधा उल्टा घुसेगा. वो रिजेक्शन के बाद ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ रहता, यहाँ तक प्राइस गई रहती, स्ट्रांगली मूव करते, देन जाके वो रिजेक्शन कंफर्म होता. ठीक है. सो मेक श्योर इफ यू आर प्लेसिंग एनी ट्रेड्स, just seeing the rejections of the candle, you have your own confluence confirmations. ठीक है. We're only having 2 minutes 40 seconds to close 15 minutes. Okay, so 1 minute के it's around 2-3 candles. Yeah, मतलब ये कैंडल के बाद 2 कैंडल होगा. अगर वो ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, then we might just exit with minimum loss, and that could be the good day for us, right? Till then there won't be any exits. chill एकदम. ठीक है. मुझे सेटअप देख के ऐसा लग रहा है ना कि और 1% उसमें ऐड कर दो रेस का. सही में इतना मतलब परफेक्ट सेटअप है, बहुत परफेक्ट है. आई एम वेरी प्रीटी श्योर दैट वी आर गोइंग फॉर दिस टेक प्रॉफिट ऑन दिस मंडे फॉर दिस लवली वीक स्टार्टिंग. पिछला वीक कुछ भी न्यूज़ नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए वी जस्ट हैड टू स्टक देयर. एंड यस वी फेस स्टॉप लॉसेस just because price was not into one direction, it was just consolidating. And if you want any confirmation of that consolidation, you just go on my previous streams of Friday, and I have explained there, and you can just watch and understand. I entered was, yeah, lovely. Hold till MT5 shows 3%, वो spread and charges के वजह से. Yeah, absolutely, Zubair. And for that reason I have good what we say a loop. तो अभी इधर से वो तकलीफ नहीं होगा अपने को. ठीक है. I told you on Friday only that I will figure this out कि इसमें क्या किया जा सकता है. And oh sorry, I did not
गो फॉर द एग्जीक्यूशंस ना, तो ये रहा मेरा एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो इट इज ऑन परफेक्टली परफेक्टली फाइन एग्जीक्यूशंस, ठीक है। And when the trade is going on, I will just show the account where it is, where it is. Okay, so the account is on $1,233, okay? Now let's see after the take profits. We might close this for 4,500, 4,600 or 700, okay? So this is the magic of managing risk properly. If you even having a two consecutive losses, and then you just hit your take profit with proper risk management, you're just you're just up, right? You're not going any downside. और अपने एक अच्छा चीज है, we did not took a single trade or a single day in a drawdown of the account, and still we are making a good profits on it. जस्ट इमेजिन इफ इट्स, अगर ये जब लाइव होगा तब मैं यही करने वाला हूँ, राइट? एक वीक का जो भी डाटा आएगा मेरे सामने, इवन इफ इट्स 1% up, 2%, 3%, 4% up, that would be the withdrawals, right? And I hope, and hopefully team and me actually got discussed, and पहला जो भी payout आएगा, we will plan some giveaways kind of shit, ठीक है? So stay tuned for this. Guys, I have no idea ये आवाज का क्या लफड़ा आज हो रहा है यार। मैंने तो अभी पूरा माइक एकदम एकदम पास पकड़ा हुआ है, सो आई रियली होप अभी आएगा आवाज, ठीक है। शायद मैंने कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ी की है, और उस वजह से। अरे मेरा 15 मिनट्स का क्लोजिंग देखना भूल गया मैं। चलो भैया, गुड टू गो गाइस, है ना? जैसा प्लान था वैसे ही 15 मिनट्स क्लोज मिला है, एंड होपफुली नेक्स्ट 15 मिनट्स फ्लिप मारेगा नीचे। M30 स्ट्रेच करेगा, H1 स्ट्रेच करेगा फॉर द डाउन साइड, और H4 बॉडी को स्ट्रेच करेगा नीचे के लिए, ठीक है। लेट्स होप फॉर दिस, एंड विल जस्ट वेट, जो भी होगा आपके सामने होगा। बैक टू ब्रेक इवन। ये अपसाइड का विक बना रहा है 15 मिनट्स, वाइल क्लोजिंग इट शुड जस्ट टर्न डाउन टू द रेड, और ये विक को उसने विक आउट करना चाहिए। दैट इज द एक्सपेक्टेशंस, एंड लेट्स सी नाउ। और एक चीज़ मैं पहले भी स्ट्रीम में बताया था, नेवर गो फॉर दैट डिजिट वाला पैनल, ठीक है? वो जो ट्रेड बीच में होता है, वो दिखता है अपने को, हाउ मच वी आर मेकिंग, हाउ मच इट इज़ फ्लोटिंग, हाउ मच, वो कभी जाना ही नहीं। बस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना काम करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, और द बेस्ट अप्रोच यू कैन हैव।
और ये 7:30 को कुछ तो ट्रम्प भी बोलने वाला है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। बट ठीक ठीक है, अगर अपने साइड में अगर बोलता है, वी कुड गो हेविली टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। पर उसके पहले ही ट्रेड खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर होता है देन इट इज़ सो गुड फॉर अस। ये एक्चुअली अकाउंट अभी सेकंड फेज पे चाहिए था, जैसे हमने ट्रेड्स लिए और जो भी रिस्क मैनेजमेंट हमने किया है। बट आई हैव नो आइडिया कि इतना स्लिपेज क्यों दे रहा है फंडिंग पिप्स, यू नो। और फिर आई वाज नॉट अवेयर कि इतना बड़ा स्लिपेज आ रहा है, एंड फॉर दैट रीज़न वो पूरा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो गया। एंड वी कुड एबल टू ओनली मैक्स टेक 1:2 आउट ऑफ द रिस्किंग 1%। और जब ले रहा था दैट स्टॉप लॉस, तब वो कमीशन चार्जेस एंड द स्लीपेज एज वेल, सो माई रिस्क पर ट्रेड वॉज गोइंग अबाउट $1,300 इच। मैंने देखा, पूरा बैक टेस्ट किया। बट स्टिल अगर 1:3 के हिसाब से भी अगर 1,300 मैंने रिस्क कर रहा हूँ, अभी तक तो चैलेंज फर्स्ट फेस क्लियर होना चाहिए था। चलो तो ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, आई हैव नो एक्सपीरियंस। ये लाइव स्ट्रीम्स पे what not shit can happen, right? So we are just staying strong here. We are not giving up. We are still continuing. We are still uh, coming up daily. Okay? And of course, we will definitely pass this challenge. We will definitely go through this, and we will set a benchmark in this YouTube की industry में, that a guy who come daily on streams, trade his account, shows the dashboard, real executions, real trade, everything real. And I don't think that at that time anyone can, judge or put a finger on me that I can't trade. So देखो, बातचीत से जितना प्रूफ नहीं कर सकते ना, उससे ज़्यादा अपने एक्शन से प्रूफ कर सकते हो। दैट इज़ मोर लाउडर, दैट इज़ मोर क्लियर, एंड दैट इज़ मोर कन्विंसिंग एज वेल। सो यही पर्पस है ये अकाउंट्स का, दैट्स इट। और अगर चलो, वी डोंट ओनली टॉक अबाउट गुड थिंग्स, अगर ये अकाउंट ब्लो होता है या फिर कुछ होता है, देन वी विल जस्ट बाय अनदर अकाउंट, विल ट्रेड दैट सेम वे, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। दैट्स इट, दैट हाउ द ट्रेडिंग गोज। रियल ट्रेडिंग ये ऐसे ही की जाती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर ट्रेड्स, दैट्स इट। रिवॉर्ड देना है या फिर नहीं देना है, वो अपने आपके एग्जीक्यूशंस पे और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर सब डिपेंड होगा, ठीक है। चलो, आई थिंक आज मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान चोद रहा हूँ। F1 consolidate कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। We are still good to go for the downside. We are having a good confirmation of M15 there. Let's wait for 5 minutes 56 seconds. When this candle will close below this area, we'll have another good confirmation that yes, we are going good for the downside. And if it is not closing, and the another candle which can possibly go above and close, that time we will take some decisions which could be beneficial for us, ठीक है। So you can see 5 minutes को अभी बस 31 seconds remaining to close, and we are not seeing any kind of volume there, and that is not a good news for us, right? But we will stay on the trade because every confirmation is still on the charts. It's is in front of our charts, that's it. Sarjit, that GAN is very important. Blessed to have you as a mentor. Thanks, Zubair. Only few can understand that.
एंड फॉर दैट रीज़न मैं वो फ्लो में जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को देखो वो फ्लो मेरा एक बार मैं उसमें घुस गया ना तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ फिर। आई जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग विद दैट। That is a real knowledge from a real trader and taking only real shit. Yes, of course. We do that and we are known to do that. I want this 15 minutes to close below it. Or like अगर ये एरिया में भी अगर क्लोज होते ना, ट्रस्ट मी दूसरा जो कैंडल होगा बहुत वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा। वो बस अभी अर्ली बायर्स को फंसा रहा है ना। दे आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब द अर्ली बायर्स। ओके सो हियर इज दैट लो ऑन M1, ठीक है, तो ये ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक होने के बाद भाई 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 तो फिर डायरेक्टली अपन वी आर गोइंग फॉर TPs, ठीक है। नो कंसोलिडेशन एनीमोर। इतना प्यारा सेटअप है पर इसमें मैं रिस्क रिस्क करनी है मुझे, बट मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके लेट्स सी हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विद द क्लोजिंग। देखो ये 15 मिनट्स अच्छा क्लोज कर रहा है। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 मिनट्स 5 सेकेंड्स, ठीक है। ये कैंडल के बाद दो कैंडल जो भी अगर ये लो ब्रेक कर पाएगा देन वी आर गोइंग वेरी स्मूथ टुवर्ड द डाउन साइड, वरना थोड़ा और वेटिंग करना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ मंडे फॉर यू ऑल। मंडेज एंड फ्राइडेज ऑलवेज गोज दिस वे, है ना। स्टिल आई थॉट कि वी आर लेट ऑन स्ट्रीम्स, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम किक हो रहा था 6 बजे। जो स्पीड से उसने वो लो तोड़ा है ये वाला, उस हिसाब से मैं बात मतलब बता सकता हूँ कि इट आई थॉट कि मैं लेट हुआ हूँ। बट इट वॉज नॉट द केस। The last minute of 15 minutes, if it is closing above this, then we have to wait. If it is not closing and if it's closing below that area, then only we are going to hit our take profits very fast, or else more 30 to 40 minutes we are getting into this trade. Let's see, ठीक है। of course और वो that cannot be told कि कितना टाइम लग सकता है, that is the also a by product। वो मार्केट डिसाइड करेगा। we are no one। okay, we're still in a good profits by the way guys।
चलो वी आर हैविंग अ गुड वॉल्यूम विद दिस कैंडल, ठीक है, देखते हैं अभी क्या करती है. It's trying to just push, like it is just trying to trap those buyers, ठीक है, that all I can able to see. और फिर ये नीचे आएगा. The one who looks for the what we say, the one who looks for the candle rejection and all, they might get trapped there, ठीक है, अच्छी spike है. And if it close below, then just think of that buyers what will happen for that. और उसके बाद में अगर वो क्लोज होती है नीचे, इट विल कैरी द वॉल्यूम विच वी आर वेटिंग फॉर, ठीक है. सो या, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड वॉल्यूम नाउ. Can you show your FP account? I show it on daily basis. Can you can just go check your check the previous. Okay, so you can just go and check your my previous streams. I have shown there, ठीक है. Okay, we are having a bad news today also. We're still remaining with 12 minutes of closing. 5 minutes is not looking absolutely good. We are moving towards the stop loss after waiting so much. And it's okay. Like, okay, it is very aggressive for the upside, okay, guys. So I don't think we can make towards the take profit today, and we'll wait for a stop loss, okay. मैंने अभी तक निकाला नहीं है. It is well set the stop loss above this area. और अब पता नहीं यार ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है वापस. चलो जो भी है उसकी मर्जी. All right, guys, we are into we have taken a stop loss there. Okay, I will show that also. So if you can able to see, this is my 1300 loss and $20 commission. So yeah, so it is what it is. We have to accept this. Okay, and let's hope, like, we'll see you tomorrow with the same timing. Okay, I will just figure out why it did not move towards the take profit and why it hit our stop loss. We have a good confirmation, by the way. We just marked this liquidity. We got the confirmations. We waited for the M15 to close below. We had our risk managed there, and eventually we started flowing towards the take profit. But now the Trump speech is there at 7:30, and for that reason it might just went to the opposite side. And yeah, so this could be the reason. I'm not saying it is the reason, but this could be the possible reasons. ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल वापस सेम टाइमिंग. ठीक है, all right guys. और हाँ, I will show the account also ना. So we are into the minus one, no, it's like point 14%. Yeah, 0.14%. ठीक है, so we are back to the break even, guys.
and yeah, so this is what it is. Let's wait for tomorrow. We have a good opportunity tomorrow as well. ठीक है, everything is shown clearly now. इसका देखता हूँ मैं रीजंस क्या होता है, इसको मैं कैसे और बेहतर कर पाऊंगा. ठीक है, चलो देन, ऑल राइट, sayonara and signing off, bye bye.